बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कम्युनिटी डेवलपमेंट के आज के मॉड्यूल में हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि शुरू के कुछ लेक्चर्स में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी पढ़े थे, जिसमें अगर आपको याद है तो हमने ग्रुप ऑफ पीपल की बात की थी, हमने बात की थी वी फीलिंग की, टुगेदरनेस की। तो वो एलिमेंट्स थे कम्युनिटी के। आज का जो हम लेक्चर है, आज का जो हमारा मॉड्यूल है वो बेस करता है elements of community development. According to United Nations report, community development is a process designed to create conditions of economic and social progress for the whole community, with its active participation and the fullest possible reliance upon community initiative. और ये याद रखिए, बार बार हर लेक्चर में मैं ये कहती हूँ कि community participation is very 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 important. According to J.C. Jackson, broadly we might define the term as encouraging a community to undertake on its own initiative to various steps necessary to enrich the life of the community both materially and spiritually. The people of a particular community plan according to their need and necessities out of their own initiative and cooperate with each other टू इम्प्लीमेंट सच प्लान। यानी उस इलाके के लोग जो हैं अपनी नीड्स को देखते हुए, अपनी ज़रूरियात को देखते हुए, अपनी मदद आपके तहत जो है वो प्लान करते हैं अपनी बेहतर जिंदगी के लिए। It is a mean of injection social change in order to break the traditional and relative static society into dynamic and prosperous one. यानी आप उसको एक पुराने सोसाइटी से निकाल कर, एक पुरानी कम्युनिटी से निकाल कर एक ऐसी कम्युनिटी में चेंज करते हैं जो कि आपकी लाइफ को कंफर्टेबल करती है। There are few elements of community development. Number one is integrated development of the whole community. हमने पहले भी किसी लेक्चर में इस चीज को टच किया है कि जो आप कम्युनिटी डेवलपमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ पे इनिशिएट करेंगे एज अ कम्युनिटी मोबिलाइजर, एज अ कम्युनिटी लीडर, एज अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट को ओन करते हुए, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो तमाम कम्युनिटी के लिए होना चाहिए और तमाम एस्पेक्ट को उसको डील करना चाहिए, ना कि वो किसी खास लोगों के लिए होना चाहिए। कम्युनिटी डेवलपमेंट रेफर्स टू द वेलफेयर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। यहाँ पे हम इंटायर पॉपुलेशन की बात करते हैं, यानी कोई एक खास सेगमेंट जो है उस कम्युनिटी का हमने टारगेट नहीं करना, बल्कि तमाम लोगों को टारगेट करना है। पॉपुलेशन नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर सेट, ग्रुप और सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी. Every society is divided into many groups and subgroups on the basis of caste, class, religion, profession, culture, race, creed and strata. यानी आपने अगर कोई कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट शुरू करना है वहाँ पे, तो आपने किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफेशन। वो जो प्रोजेक्ट है वो तमाम लोगों के लिए जो है होना चाहिए और उनकी वेलफेयर के लिए होना चाहिए। All such section take up the welfare activities, but none of such activities can be termed as community development. These can be best called normal community processes. It is only when benefits all shared by all, irrespective of any distinction, the process can be termed as community development. जब हम किसी उनमें डिस्टिंक्शन करेंगे या किसी सेट को एक्सक्लूड कर देंगे तो वो कम्युनिटी डेवलपमेंट नहीं होगा, बल्कि जब तक हम तमाम जो सेगमेंट्स हैं माशरे के, कम्युनिटी को, उनको इंक्लूड नहीं करेंगे उस वक्त तक वो हम कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं कह सकते। अगेन, कम्युनिटी डेवलपमेंट रेफर्स टू द बैलेंस ग्रोथ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द डेवलपमेंट इज इन any one field, for example only in industry, कैन नॉट बी कॉल्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट. उससे सिर्फ इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हो रही है, वो कम्युनिटी की डेवलपमेंट नहीं है। तो हम पहले भी कह रहे हैं कि तमाम लोगों को उसमें शामिल होना चाहिए. इट इज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ न्यू सोशल ऑर्डर. इट कवर ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट of social life such as industrialization, health, sanitation,
agricultural development, education, employment, etc., many things. Number 2, free from outside constraint. No outward agency exercise constraint or force people to be involved in the development program. आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, बट आप उनको फोर्सफुली उसमें शामिल नहीं कर सके. If there is an imposition from outside, then the brought to water but cannot force to drink. If improvement is imposed on people, it may at times serve the present or satisfy the interest of a particular government, but as will run the future of community in longer run. Number 3, spontaneous involvement. The people are involved in development activities spontaneously because they feel the need to increase their standard of living, to lead a better and comfortable life. They see the better world around them and develop a sense of relative depreciation. This sense work as the motive force and make them to think and act for their own development. हम उनको बता सकते हैं कि उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी लग्जरियस लाइफ के लिए, उनकी कंफर्टेबल लाइफ के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, लेकिन हम उन पर इम्पोज नहीं कर सकते. Another aspect of this fact that there are certain cases where the initiative expected of people does not come spontaneously. In such cases, different methods are used to arouse the need of that thing within the people. Such felt necessity stimulates their motives and urge them to work for the betterment of their comfortable life. कॉम्बिनेशन ऑफ आउटसाइड एंड इनसाइड रिसोर्सेज. आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो कॉम्बिनेशन होता है इनसाइड और आउटसाइड रिसोर्सेज का. आपको उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इनसाइड और आउटसाइड दोनों रिसोर्सेज जो हैं वो यूज करने चाहिए. नंबर 4, a process of administration. Community development embrace all aspects of government activity in the field of improvement, in the development of community, for example, the development of water supplies, the promotion and cooperation and better marketing, livestock and forestry, etc. It is in fact no more than a modern conception of administration. जो लास्ट हमारा एलिमेंट है कम्युनिटी डेवलपमेंट का वो है नेशनल प्रोग्रेस एज एन अल्टीमेट एम. बेशक वो कम्युनिटी पहला एम जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट का वो ये है कि उस कम्युनिटी की अपलिफ्ट हो, उस कम्युनिटी की डेवलपमेंट हो, बट द फॉर लॉन्गर रन इट शुड बी कीप इन माइंड दैट इसकी वजह से आपकी नेशन की जो है वो तरक्की होनी चाहिए. The final aim of community development program is to bring about an all-round development of the nation as a whole. No doubt that the initial stage, the focus is on the development of the particular community. A community is a group of families living within a particular territory and sharing a common culture, a common way of life. The development acts are such that this does not hamper national interest. आप कोई ऐसा प्रोग्राम वहां नहीं शुरू कर सकते जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो. तो पहला तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो कम्युनिटी की डेवलपमेंट होना चाहिए, और लॉन्गर रन दूसरा जो मेन है वो ये होना चाहिए कि अल्टीमेट गोल जो है वो हमारा जो है वो नेशनल प्रोग्रेस होनी चाहिए. तो ये थे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट. थैंक यू वेरी मच.